मेरी वजह से मेरी वाइफ, मेरी 2 लड़की वो भी पॉजिटिव हो गई। चलो घर जाओ, चलो चलो घर जाओ। तकरीबन 33 लोग मेरे पॉजिटिव आए थे। The Mumbai police was already short-staffed before COVID happened. कोई भी दुकान चालू नहीं रहेगा, सब दुकान बंद करो। डर तो लगता है, घर जाने के बाद डर लगता है, फैमिली वाले को भी डर लगता है। ड्यूटी करना तो पड़ेगा। इतनी कम उम्र में उनको बीपी चालू हो गया फिर। कैनन फॉडर मरने के लिए तो भर्ती किया है। So like that is the attitude of the others. So it's taken us a little over 4 weeks to get permission to talk to the Mumbai police, and we finally got permission from the PHQ, from the police headquarters, to shoot at this police station, which is the Dharavi police station. It's received a fresh paint job, which is nice. But one of the pillars of this entire lockdown has been the police. We want to find out what they're going through. 2 months ago, when we visited Dharavi in Mumbai, it was a hotspot, reporting 1,400 COVID cases in just a month. Cut to today, the numbers have dropped off to single digits, and the work done here is being hailed by the WHO as an example for the world. The Dharavi model of handling coronavirus successfully. And while the credit for the planning should go to the municipal officials, the implementation was done by the Mumbai police. The police went home to home, quarantining people and maintaining order. They were also put in touch of distributing food. Police personnel were pulled off all of their other duty and put on COVID duty, oftentimes putting their own lives at risk. Since COVID broke out in Mumbai, 3,900 police personnel of the Mumbai police have tested positive. 56 have died. The state of Maharashtra has seen a total of 9,934 positive cases among the police and has seen 107 deaths. The Dharavi police station, where we are right now, more than 30 cops tested positive and 1 passed away. शुरुआत से तकरीबन 33 लोग मेरे पॉजिटिव आए थे। जो 33 में से एक जो शिवाजी गायकवाड़ जो एक्सपायर हो गए हैं, वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद उसके पहले वो 32 है, वो वापस आ गए थे, ड्यूटी कर रहे हैं, सब लोग ड्यूटी कर रहे हैं। उसके अलावा भी पिछले 10-12 दिन में मेरे 3 ऑफिसर वापस पॉजिटिव आ गए हैं। 2 कांस्टेबल्स है, वो पॉजिटिव है। These men are being fined for not following the rules, and they're here to now pay up. तो यहाँ क्या हो रहा है सर? यहाँ जो कोरोना में बिना कारण जो लोग घूमते उनके ऊपर कार्रवाई चल रहा है। जो विदाउट हेलमेट डबल सीट हो रहा है घूमते, उन पे कार्रवाई चल रहा है। उनका कार्रवाई चल रहा है। हाँ। तो ये बाइक की चाबियाँ, गाड़ी की चाबियाँ ले नहीं, उनको कैसा है, हम क्या करते हैं, उसको एक को लाके चार्ज मार दे, इधर ला उधर से पकड़ने का, इधर आके चार्ज मारने का और छोड़ देने का। अच्छा। हाँ। और वो लोग मानते हैं कि मतलब बहस कर रहे हैं आपके साथ? नहीं, बहस अभी तो कोई करता नहीं, इस चौकी के सामने कोई बहस नहीं करता। हाँ। तो ऐसे बहस करने वाला भी जब शांत बैठ जाता है इधर। और इतने पास आ रहे हैं तो थोड़ा उनको रिस्क नहीं हो रहा है? उनको थोड़ा सा मतलब बोलनी चाहिए ना, दूर रहे। दूर रहो ना भाई, उनको रिस्क होगा, पुलिस वालों को रिस्क हो रहा है। हाँ, क्यों निकले आप घर से? मेरी गाड़ी में विदाउट हेलमेट था, इमरजेंसी में आया। हाँ। तो इसकी वजह से मेरा वो सर ने चाबी निकाल दिया। मैं हेलमेट नहीं पहना था, मेरी गलती है। अच्छा, तो आपने आप बिना हेलमेट के घूम रहे थे? हाँ। कम से कम एकदम डबल सीट, मास्क नहीं, जिसके पास हेलमेट नहीं, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, वो कोई कार्रवाई करते बिना हेलमेट, ऐसे करते कार्रवाई करते तो छोड़ देते अपना से। जिसके पास हेलमेट है, डॉक्यूमेंट्स है, उनको पकड़ते नहीं। तो जैसे कोई अर्जेंट में मेडिकल में जा रहे हैं, जैसे दवा वाले लेने जाते उनको भी छोड़ देते। और क्या मेडिकल के बहाने भी बहुत लोग निकलते हैं बाहर, मुझे मेडिकल जाना है, कुछ जिसको जाना ही भी नहीं है ना, बोलते हैं मुझे मेडिकल जाना है, ऐसे भी करके भाग जाते हैं, ऐसे ही हो जाता है। इसलिए थोड़ा करना पड़ता है कार्रवाई सबको। पैसे नहीं, पूरे दिन काम करते, 300-400 का काम करते, घर पे क्या लेके जाएगा। So the Mumbai police was already short-staffed before COVID happened. And about 7,500 cops who are above the age of 55 have been asked to stay home because of comorbidities and the fact that they are at risk. That means that the ones who are actually working
came under even more pressure to be able to fill up shifts. Specifically to do with Dharavi, a lot of the work of maintaining social distancing, closing shops, making sure people stay in their homes in the smaller gullies was done by the Mumbai police. चलो घर जाओ, चलो चलो घर जाओ। अभी कोई भी दुकान चालू नहीं रहेगा, सब दुकान बंद करो। आपके पुलिस स्टेशन में काफी लोग पॉजिटिव आए हैं ना, तो आप लोगों को मतलब डर नहीं लगता? मैं भी पॉजिटिव होके ही अभी ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, मेरे को भी पॉजिटिव हुआ था। 8 दिन के बाद मैं नेगेटिव होके 14 दिन क्वारंटाइन होके ही अभी ड्यूटी ज्वाइन किया हूँ। मेरे को ऐसा कुछ ऐसा डर नहीं लगता है। जो है अपना काम है ईमानदारी से करने का। डर तो लगता है मैडम, डर तो लगता है ना? डर तो लगता है, घर जाने के बाद डर लगता है, फैमिली वाले को भी डर लगता है। हाँ, लेकिन ड्यूटी करना तो पड़ेगा। ड्यूटी हाँ। 10 से 7 दुकान का टाइमिंग है, अभी बंद करो दुकान सब, बंद करो। Until recently, Mumbai had a night curfew that required all shops to be shut at 9 p.m. and for people to be inside their homes after the deadline. कोई रुकेगा नहीं, इधर चलो अंदर। और 9 के बाद कर्फ्यू ऑर्डर है 7 बजे तक। अच्छा, मेडिकल चालू रहता है। अच्छा। और अगर उसके बाद आपको कोई मिला रास्ते पे तो? अगर बिना कारण समझो घूम रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अच्छा। और सर, आप लोग सेफ्टी कैसे मैनेज करते हो अपनी? इतना इंटरेक्शन होती है आपकी लोगों के साथ। अगर किसी से हम कुछ कॉल है हमारे गाड़ी पे हाँ। तो समझो आया है तो हमारे पास हैंड ग्लोव है अंदर जी। वो हम पहन लेते हैं पहले ही। हाँ। जैसा ये शील्ड है अच्छा, वो शील्ड हम लगा के अच्छा। बात करते तो अभी धारावी की गलियां बहुत है ना, छोटे छोटे, हैं। बराबर। तो आप लोग वहाँ अंदर भी जाते हैं कि वो ड्यूटी कोई और कर रहा है? नहीं, छोटी छोटी गलियां में हमारे बीट मार्शल रहते हैं। हाँ। जो बाइक पे घूमने वाले। अच्छा। तो वो अंदर का जो सब है हाँ। दुकान या कुछ आदमी लोग घूमने वाले हाँ। वो सब बंद कर दे। Dharavi's narrow gullies are being monitored by the beat marshals. These cops on motorcycles have face shields and PPE kits, but they're putting themselves at a larger risk than the others. The rains are only making their job tougher. While these police officials put on a brave face, the possibility of going home and infecting their family members is a risk they all fear. अप्रैल मई में मैं खुद भी कोविड का शिकार हो गया। अब मुझे भी कोविड की लागन हो गई, पॉजिटिव आ गया। तो फिर मैं खुद एडमिट हो गया। मेरी वजह से मेरी वाइफ, मेरी 2 लड़की वो भी पॉजिटिव हो गई। वो लोग भी एडमिट, मैं एक जगह एडमिट, वो लोग एडमिट। एक्चुअली क्या मेरा तो ड्यूटी है, मुझे कुछ नहीं हुआ था, मतलब मैं जाके वापस आता। लेकिन वाइफ वगैरह जी जो है उसको बीपी रहता है, बीपी है, डायबिटीज़ है, वो लोग ज़्यादा डरते थे। लड़के लोग भी उनका भी पहले टेस्ट, दूसरी टेस्ट नेगेटिव आ गया, लेकिन वाइफ का मेरा आएगा नहीं आया, उसका वापस पॉजिटिव आने लगा। तो वो ज़्यादा डरने लगी क्योंकि कमज़ोर थी, डायबिटीज़ था, उसको बीपी था। So the other challenge with the already overburdened Mumbai police is that as the seniors retire, the government is not hiring enough replacements. So the force is already down by about 10 or 15%, understaffed in a non-COVID era. And because the stress of the job and the hours being so long, most of them already have the comorbidities of blood pressure and heart disease and diabetes that make them vulnerable. In fact, a study into the large number of deaths among police constables was conducted by the police administration, and it concluded that the pressures of the job have led to the police being unhealthy. Long duty hours, no exercise, and unhealthy food means cops develop comorbidities like high blood pressure and diabetes in their early 30s. This makes them easy targets for COVID. The study also recommends younger police personnel be on the front line of duty. How can you expect a
constable or an officer who's out of his house for 15-16 hours, where are we giving them the time to remain fit or practice fitness? What happens to this man who's the fittest when he's at 20, 22, 23, and by the time he reaches 50, they are all, I repeat, they are all suffering with some or the other serious lifestyle related illness. So they would be having diabetes, not only diabetes, high uncontrolled diabetes, because you can't only blame that these people are eating whatever they want or they are not disciplined. Where are you allowing him to lead a disciplined life? We had no case where people would not or refuse to come for work. In fact, we had to take out a circular which said that 55 plus they were more vulnerable, and therefore we said 55 plus stay at home, work from home. So this is actually the second shift that stepped out now. Remember, we did one shift at about 7 o'clock in the evening when they were asked to shut down. This is the second shift now. But obviously people haven't listened. So you can see the stalls are still here. The hand carts and the fruit carts are still here. And it's past curfew, so they have to be dispersed. हमारे डे नाइट चलता है, डे नाइट ऑफ। आज नाइट किया तो कल छुट्टी रहेगा, परसों डे को आने। एक डे एक नाइट एक ऑफ। और जो गांव गए थे उनका पूरा बंदोबस्त आप लोगों ने किया? हाँ, इधर से जाने का पूरा बंदोबस्त हमारे इसने किया था, स्टेशन तक छोड़ने का, उनका पासेज ये बनाने का, जो उनका फॉर्म लेने का, तो ट्रेन तक बिठाने का पूरा बंदोबस्त हमने किया। साइकिल मिल गया है, अरे बंद करना। So, according to the police, obviously after the whole unlock began, there was a certain relaxation among people as well about coronavirus. And you know that people are now walking around without their masks, without maintaining social distancing, because they just seem to think that the virus is gone, it's over. But it's not. And to be able to keep that kind of pressure on and make people continue to maintain distance and wear their masks and follow the lockdown and follow the curfew is what these cops are having to do right now. So we can see that there is a reaction to the cop car being pulled up, but things are a lot less serious than they used to be. We spoke to former top cop D. Shivanandan, who served as Mumbai Police Commissioner and DGP Maharashtra before he was brought back again as Commissioner after the 26/11 terror attacks to look into security of the city and the training of the police. He says senior leadership within the police should step up to ensure that personnel are taken care of when on the field. The scale and the nature of the virus is what hit the police. But then, whether there is a gas leak or whether it's an explosion or a terrorist attack or organized crime or whatever it is, the front line people who go, the first line of defenders who reach the spot is this. As a Madhya Pradesh minister, BJP minister said, cannon fodder, marne ke liye to bharti kiya hai. So like that is the attitude of the others. So our people go, they have been trained, you go there, find out and report. He rushes there without even knowing what is he walking into. So we walked into the pandemic control without being told, without being prepared, without anything whatsoever. Just we jumped headlong and then we are suffering now. Would you say that this should be a watershed moment for those managing our police to now seriously look at improving health conditions, improving reform? A lot of, I know, appeals go to government, but is government necessary to make these decisions?
Madam, government need not be brought in the picture for everything. It is up to the police leadership, the IPS, enlightened IPS leadership can take a lot of decisions. They have got a lot of access to police welfare fund. There is a police foundation which is created also where people can donate, corporates and other CSR and all can donate. So we've spoken with police officers and with constables, and they haven't actually been able to talk to us completely on camera because obviously they're serving officers and they have to worry about what they say. So we're attempting now to speak to family members of police constables to find out what the pressure is like for families. Some of these families have tested positive. Some of these families have lost loved ones. अभी मेरा बेटा पुलिस में है, वो पॉजिटिव निकला। कलीना के हॉस्पिटल में उन लोग को लेके गए। उधर क्या वाफ लेने के लिए उन लोग को बोला, बस क्या गोलियां दी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस वाले के लिए अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। 24 घंटा पुलिस वाला ड्यूटी करता है। घर में आएंगे, बच्चे लोग होंगे, छोटा घर हम लोग का 10 बाय 10 का। तो जब आपके बेटा अभी वापस ज्वाइन किया उन्होंने ड्यूटी? हाँ, ज्वाइन किया। आपको डर लगता है वो जब ड्यूटी पे जाए? हाँ, डर तो लगता है, साजिक है ना। अभी कोई जो उम्र में बड़े होते हैं, अभी जैसे मेरे हस्बैंड अभी 58 के हो गए, रिटायर हो गए, तभी भी डर लगता है ना। मालवन ही जाते हैं, बहुत लंबा सफर है इधर। अच्छा, तो यहाँ से मालवन रोड पुलिस स्टेशन उधर का फ्रस्ट्रेशन रहता है। हाँ, तो उनको तकलीफ होती है। कितनी कम उम्र में उनको बीपी चालू हो गया। फिर तो ये 55 के ऊपर है, उनको तो छुट्टी दे दिया। फिर ये लोग को लोड आ गया। फिर हाँ, क्या कर सकते हैं? करना तो चाहिए ना। और मना नहीं कर सकते। हमारा टॉयलेट देखो, वो टॉयलेट की हालत देखेंगे ना। हमारा देखो, सैनिटाइजर ही दिए, क्या दिए? सैनिटाइजर दिए, बाकी कुछ नहीं दिए। ये दिया पुलिस का स्टैम्प लगा के बस, 2 लेने का, लगाने का, 2 एक धोने का, एक लेने का। The police administration tells us that during the entire lockdown, not a single case of corruption was reported against the Mumbai police. They also say that despite morale being fairly low, not a single policeman shirked his duty. And while the city came forward to donate masks and sanitizers and other material to the police, maybe it's time to do more. But the fight that Mumbai has fought against COVID, which we can now be proud of achieving some success on, was really led by the police. By police constables who went into homes and got people quarantined, by police constables who were shutting the shops on time and telling people to stay off the roads. A lot of them got very, very sick and many of them died. And a closer look just brings us back to the same point. COVID or no COVID, the personnel of the Mumbai police and the Maharashtra police need help. In the city, they're understaffed, they're overworked. They're unhealthy because of the lifestyle that they're leading, and it brings tremendous pressure on family members. Demands are being made for special hospitals or more special hospitals for the police, for psychological and counseling support for the police, and for better housing. I think it's time for the citizens of Mumbai to maybe step forward and speak on behalf of our police. Because at the end of the day, the men in uniform aren't unionized and can't really put forward a proper plan of what they really need. It's citizens who have to come forward and speak for them. Advocate for the Mumbai police. Try to find ways to make their lives better.